So what we were trying to do was that let's start with an example and then let's try to populate their data into an empty binary tree. So let's say data comes to you in this sequence, and let's say we have 7 nodes. So हम इसको left to right read करते हैं, और when we have the first data item with us 10, तो हमारे पास इस वक्त tree is empty, so there is no node at all, so we create a new node, we store 10 over there, and we refer to this node as the root node of the tree. So it becomes the root, and its left side is empty, right side is empty. So अभी हम ये करते हैं कि for example when 20 will come, तो हम इसको will store it on the left side of 10. When 30 will come, we'll store it on the right side of 10. When 40 will come, we'll store it on left of 20. When 50 will come, we'll store it on what? On right of 20. When 60 will come, it will go on left of 30. This is an arbitrary setting, right? This is just an example that I'm trying to do, and you're not really bound to do it this way. So, but if I do this way, what I'm doing is that or let's say I have two more data items as well. Let's say we have 80 and 90 as well in our input sequence. So when 80 will come, it will go on left of 40. When 90 will come, it will go on the right of 40. So in such kind of situation, अब मेरे पास जो total number of nodes हैं, उनको what we will call them n, and there are 3, 7, and 9 nodes. So, and then there is a root, and there are leaf nodes. So can anybody tell me कि leaf nodes कौन-कौन से हैं? 80, 80, 90, 90, 60 or 70. 50, 60, 80, 90 70, or 60, 70. 80, 90 और 50. होगा 70, 50. Very good, right? So जिन nodes की further extensions नहीं, all of them are the leaf nodes. अच्छा, so एक root node है, दूसरी side leaf है ना, तो जो ना root है ना leaf है, we call them internal nodes. So 40, 20 and 30 are the internal nodes. So couple of definitions which we want to look at are that. So root जो है, we call it a parent node, and it has two child nodes. एक इसका left child है, एक इसका right child है. So जो left branch है उसको we'll refer it as the left child, और एक इसका right child है. So there is a relationship of every node with the root node. 10 को हम कहते हैं कि 10 is the parent node of 20 and 10 is the parent node of 30. When we say, let's say if we look at 50, so 50 is the right child of 20, and 50 is the grandchild of 10, or 20 is parent of 50 and 10 is the grandparent of 50. ठीक है? So एक जो branch है, for example 10 और 20 और 50, ये एक branch है. So तो उस branch में जितने भी नीचे वाली side पे node आ रहे होंगे, they actually belong to the same generation. वो जो generation है, तो उसको हम we are calling it as one branch. ठीक है? So कुछ ब्रांचेस जो होंगी वो छोटी होंगी साइज में, कुछ ब्रांचेस लंबी होंगी. फॉर एग्जांपल ये जो मैंने रेड हाईलाइट किया है, इस ब्रांच का साइज जो है ना, इस ब्रांच में चूंकि 3 नोड्स हैं, इस ब्रांच का साइज इज, वी रेफर टू इट एज कि इस ब्रांच का साइज इज 2. ठीक है? तो एक स्टेप ये वाला है, एक ये वाला है ना, तो एसेंशियली 2 जनरेशंस की बात कर रहे हैं, यानी दो स्टेप्स हैं इसमें, वर्सेस सम अदर काइंड ऑफ ब्रांच कि हम 10 से स्टार्ट हुए, गो टू 40 एंड देन वी रीच टू 80. सो ये एक और ब्रांच है ब्लैक वाली. सो इस ब्रांच का जो साइज है दैट इज 3. ये एक स्टेप है, इसमें ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है. ये स्टेप्स जो हॉप्स हैं, जंप्स हैं दरमियान में, तो ये जंप्स हैं, वी कॉल देम टोटल नंबर ऑफ जो जंप्स हैं, दे एक्चुअली मेक अप द साइज ऑफ दैट ब्रांच. जो साइज ऑफ द ब्रांच है, तो
इसको हम कहते हैं कि दिस इज हाइट ऑफ द ब्रांच, ठीक है। सो ईच ब्रांच माइट बी हैविंग डिफरेंट हाइट। Okay, so let's clean it a little bit. अब मेरे पास ना बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, 10 से 20, 20 से 50, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 90, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80. Same way, we can go on the right side, 10 से 30, 60, फिर 10 से 30, 70. So there are so many branches. So we define another term. If somebody asks you that what is height of the tree, so height of the tree is essentially height of the longest branch. So आपके पास जितनी ब्रांचेस हैं उनमें से जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी that will be referred as height of the tree, ठीक है। So in this case अब मेरे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस की ज्यादा ब्रांचेस वो हैं जिनकी हाइट जो है that is 2, but there are 2 branches जिनकी height is 3, so the highest figure is 3. So hence we'll say that height of the tree is 3 in our context. और वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी कि ये वाली जो हाइट है ना, दिस मेक्स इट एज 1, 2 एंड 3. सो हाइट जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इन दिस एग्जांपल, हाइट ऑफ द ट्री इज 3 और n जो था टोटल नंबर ऑफ नोड्स दैट वाज 9, ठीक है। So any questions on that, what do we mean by height of the tree? Is everybody okay? Because probably we are talking about now very simple stuff. एक्सक्यूज मी सर, Yes. रिपीट कर दे। सर क्या हम इसको इनहेरिटेंस कह सकते हैं? कंप्यूटर साइंस में इनहेरिटेंस का एक स्पेसिफिक मतलब होता है ना कि आपकी क्लास है, उसकी फिर एक चाइल्ड क्लास है, फिर उसके आगे चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे वो पूरी क्लास नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक नोड है ना, और दैट नोड इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट ना, ठीक है। तो उस सारे जो Yes, नोड्स हैं, चाहे वो पेरेंट नोड है या चाइल्ड नोड है या इंटरनल नोड है, ऑल ऑफ देम एक्चुअली बिलोंग टू वन क्लास, और उस क्लास का नाम है नोड क्लास. So primarily all of these nodes 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, all of them are the objects of the node class. And the kind of connection, the kind of memory connection which we are establishing between the nodes is making them the parent and child wala relationship. ठीक है? So inheritance हम इसलिए नहीं कह सकते because that's the kind of relationship which happens to be there between different classes. ठीक है? तो ये वाले objects हैं of the same class. Make sense? yes sir. Okay. So सर yes. सर इस तरह हो सकता है कि राइट साइड पे 30, 60, 70 ना हो सर, इस तरह भी लेफ्ट साइड पे इस तरह ट्री बन सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह आपने ट्री एक्चुअली देखे होते हैं ना, कि लेट्स से आप कहते हैं कि ये वाला हो ही ना या ये भी ना हो ना, तो दिस इज आल्सो ट्री एंड इट्स अ बाइनरी ट्री. व्हाई वी आर सेइंग इट बाइनरी? Yes, sir. बिकॉज ऑन एवरी नोड यू नीड टू चेक इसकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं दे आर एट मोस्ट 2. ठीक है ना, एट मोस्ट 2 ब्रांचेस का मतलब क्या है कि दोस कुड बी 0 ब्रांचेस, दोस कुड 1 ब्रांच, 2 ब्रांच ना, इन दोनों तीनों में से जो भी फिगर है. तो 10 की ब्रांचेस कितनी है? 1, so that qualifies. 20 की ब्रांचेस कितनी है? 2, that qualifies. 40 की ब्रांचेस कितनी है? 2, that's also fine. 80 की ब्रांच 0, 90 की ब्रांच 0. So and all of them are connected, so hence it's a tree. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Another important thing, आपकी बात से जो मुझे याद आ रही है, और आई थिंक वो कुछ कुछ हमें वैसे भी खैर क्लियर हो रही होगी, कि हमारा जो नेचुरल ट्री होता है ना, उसमें आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि ये एक 50 एक लीफ नोड है ना, तो इसका जो राइट साइड है दैट इज कनेक्टेड विद रूट बैक. लीफ वापस रूट नीचे की तरफ कनेक्ट बैक नहीं होता. ठीक है, सो इस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, विच मींस दैट नो बैकवर्ड डायरेक्शन में नो लिंक्स ना, नो बैकवर्ड कनेक्शंस.
Make sense? Yes, sir. Okay, so before we actually have a little bit more detail of the height, so there is another terminology which we use, that there are different levels of the tree. For example, so ये एक जो root है, that is उसका अपना एक level है ना, तो root बाकी levels जो है वो root से बड़े वाले होते हैं. So we start कि root is at level 0, और उसके बाद जो अगले वाली लेवल है दैट इज नोन एज लेवल 1, और फिर जो अगले वाले नोड्स हैं दे आर एट लेवल 2, और फिर जो अगले वाले लेवल्स हैं वो लेवल 3 पे हैं. ठीक है, तो ये जो हाई इंडेक्स सबसे हाईएस्ट लेवल नंबर होता है दैट प्राइमरीली बिकम्स द हाइट, क्योंकि कोई और ऐसा नोड नहीं है जो इस अगले वाले लेवल पे हो ना, जब तक 80 और 90 के फर्दर आगे लेफ्ट या राइट चाइल्ड क्रिएट नहीं होते. तो ओके, मेक सेंस? सर हाइट को इंडेक्स कह सकते हैं कि लेवल को सर? सॉरी, सर लेवल को हम इंडेक्स कह सकते हैं? नहीं. देखिए, इंडेक्स हर नोड का यूनिक होता है ना, एक डेटा आइटम का एक इंडेक्स होता है. यहाँ यस पे एक सर. लेवल पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 80 और 90 का लेवल एक ही है, 40 और 50 का लेवल एक ही है. ठीक है, यस तो सर. इंडेक्स जो होता है ना वो यूजुअली यूनिक होता है ना. जब इंडेक्स की हम वैसे इंग्लिश में भी टर्म यूज करते हैं, तो दैट एसेंशियली मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग यूनिक ना. जिस तरह आपका आईडी कार्ड नंबर है तो वो सिर्फ आपका है, वो किसी और का नहीं हो सकता. आपके पास जो फोन नंबर है वही सेम फोन नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता. ठीक है, सो यहाँ पे वो यूनिकनेस वाली चीज नहीं है, तो दैट्स व्हाई सो वी यूज द टर्म लेवल ना. तो लेवल एक्चुअली वो नेचुरल ट्री से आ रहा है. अब देखो ना कि जो असल वाला दरख्त होता है जो आपने बाहर देखे होंगे, तो उसकी रूट इज एट लेवल 0. जमीन वाला लेवल जो है दैट इज रेफर्ड एज लेवल 0. जब रूट से आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो जब तक आगे ब्रांचेस नहीं निकलती उसको आप एक लेवल कहते हैं. जब ब्रांचेस निकलना शुरू कर देती हैं तो एक और लेवल बन जाता है. जब फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं तो एक और लेवल बन जाता है. ओके, so there is another terminology that is known as complete binary tree. और complete binary tree की first direct condition is very obvious that it has to be a binary tree, और binary tree अब हमें पता चल गया क्या होता है, which we have been discussing so far. और दूसरा ऑप्शन ये है कि binary tree जो है ना, it is filled completely at all possible levels except the last level. So can you read through this comment again, or this bullet again, that it is filled completely at all possible levels except the last level? What does it make? What does it mean, in your opinion? मीन के सर उसके हर लेवल पे 2 ब्रांचेस उसके हर लेवल पे मतलब 2 ब्रांचेस होंगी ना, जितनी भी ब्रांच और उनकी फिर आगे 2 ब्रांच है वो कंप्लीट होंगी. वेरी गुड. तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ट्री बनाया था, वाज इट कंप्लीट बाइनरी ट्री? नो सर, वो कंप्लीट. और जो क्योंकि आपने मुझसे ना कुछ साइड के ना नोड्स डिलीट करवाए थे ना, तो इसलिए वो कंप्लीट नहीं रहा था. अगर उससे पहले वाला वर्जन अगर आप रिकॉल करें तो दैट वाज कंप्लीट. हाँ सर, वो Yes. So we can draw it again. So complete binary tree needs to look like this, that it is filled at all possible levels. सर मतलब Yes, yes. उसके जो बोलिए. लीव्स हैं वो सारे एक ही लेवल पे हों? नहीं, लीव्स तो जरूरी नहीं एक लेवल पे हो ना. कि फॉर एग्जांपल ये जो अभी मैंने ट्री बनाया है ब्लू वाला, आपको अगर नजर आ रहा है, सो इट इज फिल्ड एट ऑल पॉसिबल लेवल्स एक्सेप्ट द लास्ट लेवल. अब इसमें कितने नोड्स हैं?
It contains how many nodes? It contains 13 nodes probably. So n is 13. ठीक है, मेरे पास 14वां आइटम ही नहीं है ना, तो मैं इससे आखिरी वाला जो ये वाला नोड है, ये लीफ ऊपर वाले लेवल पे है. आई कांट फिल इट फर्दर, सो इट विल स्टे हियर ना. यस सर. सर ये फिर भी कंप्लीट है. It's complete na, because let's look back on the definition of complete binary tree. It is filled at, or it is filled completely at all possible levels except the last level na. ठीक है. So if you look on this figure again, तो इसके levels कौन से हैं? ये एक level है, ये एक level है, ये एक level है ना. तो this level is completely filled, this level is completely filled, this level is completely filled. यहाँ पे gaps हैं इस level पे, और ये लास्ट लेवल है ना. यस. अगर ये लास्ट ना होता तो फिर गड़बड़ होती. ठीक है, क्योंकि लास्ट है तो इसमें मेरे पास एक्सेप्शन है. और वो एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज अगर मेरे पास डेटा थोड़ा आ रहा है तो आई विल हैव टू, आई कांट मेक इट फर्दर ना. मेरे पास अगर 13 ही डेटा आइटम्स है तो वो इसी तरह ही ट्री बनेगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री. आई कांट ऐड 2 डमी नोड्स. ठीक है. सो लेट्स ओके से, सर. तो ये मेरे पास दो जो खाली पोजीशंस है ना, these are allowed position that yes it is a complete binary tree. क्योंकि मेरे पास डेटा थोड़ा है तो इसमें ये वाली आखिरी वाली जो दो स्लॉट्स हैं, these may go vacant. लेकिन अब मेरे पास जब भी डेटा आएगा, जब भी 14वां एलिमेंट आएगा, तो मेरे लिए मस्ट है कि मैंने सिर्फ इस जगह पे उसको इंसर्ट करना है. जब मेरे पास 15वां आएगा तो मेरे लिए मस्ट है कि मैंने उसके इस पे इंसर्ट करना है. इन दोनों रेड वालों को फिल किए बगैर मैं नीचे वाले ग्रीन वाले लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि अदरवाइज आई विल बी वायलेटिंग द डेफिनेशन ऑफ द completeness. I will be violating the definition of the complete binary tree. तो सर ये अभी भी कंप्लीट बाइनरी होगा क्योंकि इसका लास्ट लेवल भी सर वो भी फुल हो गया है. ये Filled देखिए हो गया. वो वाला एक्सेप्शन है ना, इट हैज टू फिल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल. अगर वहां पे डेटा नहीं है तो ना. ओके सर. ठीक है, अगर है तो इट्स परफेक्ट, दैट्स द आइडियल कंडीशन. अगर उनमें से एक नोड मिसिंग है, लेट्स से ये इतना है ना, फिर मेरे पास आइटम्स जो है टोटल 14 हो जाते हैं, व्हिच इज फाइन. जब मेरे पास 15वां आइटम आएगा तो आई विल क्रिएट वन मोर नोड ओवर, तो इट विल रिमेन कंप्लीट ना. ठीक है. जब मेरे पास 16वां आएगा तो दैट विल गो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड. अभी भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बिकॉज अब इसका लास्ट लेवल कौन से वाला है? वो ये वाला है. ये तो ये वाला अच्छा. इनकम्प्लीट है, उसके ऊपर वाले सारे कंप्लीट हैं. इसके ऊपर मेरे पास एक्सेप्शन है कि अगर मेरे पास डेटा नहीं है तो आई कैन कीप इट इनकम्प्लीट ना. ठीक है. ओके. Going back to the definition, I probably missed one aspect over there in the definition. That is that when you say filled completely, so you have to take care of the direction as well. Whenever you will be adding more elements into the tree, so you will be adding them from left to right direction. ठीक है. So in the structure, अब ये वाला है ना, तो ये मेरा आखिरी वाला जो नोड है वो मैं उसको यहाँ पे नहीं रख सकता कि लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि आखिरी वाला जो नोड है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. दिस इज समथिंग व्हिच आई कांट डू. तो आई हैव टू टेक केयर कि लेफ्ट टू राइट में फिलिंग कर रहा हूँ. तो लेफ्ट टू राइट जो आखिरी लेवल है ना, लेफ्ट टू राइट वो कंप्लीटली फिल्ड हो, जहाँ पे रुकता है रुक जाए. अब्रप्टली दरमियान में मैं ऐड नहीं कर सकता. ठीक है. So I always have to fill the tree from left to right at all possible levels, or the last level is an exception. अगर मेरे पास डेटा कम है तो I can ignore it, लेकिन जितना है उसको left to right fill करूँगा. ठीक है. और अगर पूरा है तो that is the ideal situation. Okay. Let's draw one more tree to have a little bit further insight. मेरे पास रूट नोड है, मेरे पास दो चाइल्ड नोड हैं, इन दोनों के फर्दर दो चाइल्ड नोड हैं. सो इतने तक कंप्लीट है कि नहीं है?
Yes, sir. Yes, sir, complete. Yes, sir. Okay. Is it a complete binary tree or not? Yes, sir. Yes, sir. Complete. Yes, sir. जल्दी से बनाएं गिने बगैर। n कितना है? गिने नहीं ना, n बताएं। अब हम काउंटिंग शुरू कर गए अगर जल्दी नहीं बता रहे तो। सर हमारे 31 पास जितने लेवल होंगे 31 31 31 ये किसने बताया मुझे? सर मैंने निदा ने बताया। और सर इंसाफ जितने है, लेवल होंगे आपने गिन के बताया 31? सर आइडिया लगाए। कैसे? वो आइडिया बताएं, कैसे आइडिया लगाया? सो जितने लेवल्स होंगे। ओके, लेवल वाली किसने बात की है? सर मैंने कहा जितने लेवल होंगे 2 की पावर उतने लेवल ले लें। बाय 2 की पावर। सर फिर तो 32 बनेगा। फिर तो सर मैंने 32 काउंट नहीं किया। बनेगा। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सो 2 की पावर 4 यस कि 5? सर आपने कहा काउंट नहीं करना, मैंने काउंट किए बगैर सोचा कि फिर बिल्कुल जल्दी बिल्कुल से ठीक है, कैसे करूं। बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फाइन। सो देखिए, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना कि अब मेरे पास हाइट कितनी है इसमें? 4 sir. हाइट इज 4 4। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 16। 32 2 की पावर 32 4। sir. 16 2 की पावर 4 कितना होता है? फिर करें। 2 2 2 2 2 आर 4, 4 सर 2 आर 16 होता है। 8, 2 आर 16, 16 होता है ना? ठीक है। So essentially, in a complete binary tree which is filled at all possible levels, so number of nodes are 2 raised power h plus 1. 2 raised power h plus 1 कितना होगा? अब 2 raised power 5, 2 raised power 5 कितना होगा? यस 32 32 minus 1. And this is what? This is n. This is the number of nodes. So in a complete binary tree, there is a very clear relationship between the height and n. कितनी हाइट में आप कितने नोड्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप करता हूँ ड्राइंग को, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा क्लटर हो गया, तो वी कैन डू इट अगेन इफ यू डिड नॉट रियली गेट द एसेंस ऑफ इट। Okay, so what we're saying is कि n is equal to now, जो हमने अभी तक फिगर आउट किया है कि it's h plus 1, 2 की पावर h plus 1, 2 की पावर हाइट plus 1 minus 1 नोड। माइनस 1 ये है कि एक लेवल ऐसा है जिसपे रूट अकेला है, तो वी हैव टू उस लेवल को हमने उसी तरह हाफ में कट किया है ना। बट सी वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू सी ओवर हियर इज कि अब आपको लग रहा, आपने जिन्होंने काउंट भी किया है और जिन्होंने काउंट नहीं भी किया, आई थिंक सब एक पेज पे भी पहुंच गए। इन दिस एग्जांपल n इज एक्चुअली 31, h इज 4, so 2 की पावर 5, h plus 1 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 minus 1 is 31। ठीक है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि हम h को प्लस प्लस कर देते हैं, h को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो h विल बिकम व्हाट? h विल बिकम 5। जब h 5 होगा तो मेरे पास n कितना होगा? 32 60 63 सर 32 32 होगा सर। 32 होगा जब h 5 होगा तो 63 होगा 33 33 63 होगा सर। 63 होगा। Sir 63. देखो 2 raised power h plus 1 which means 2 raised power 5 plus 1 which means 2 raised power 6। 2 raised power 6 कितना होता है? हम इसकी बात कर रहे हैं। 64 64 minus 1
63. ठीक है. Okay, so n will, in that case, n will become 63. थोड़ा सा और अगर हम इसी एक्सरसाइज को एक्सटेंड करें, and we can get probably better insight कि let's say h को हम थोड़ा और इंक्रीमेंट करते हैं और h becomes 6. When h becomes 6 तो n कितना बन जाएगा? जल्दी बताएं. 127. 127. 2 की पावर 7 because h plus 1 करना है minus 1. So 127. Now you can see the relationship. H किस स्पीड से बढ़ रहा है? H is what? H is height of the tree, and height of the complete height is height of the perfectly complete binary tree. If we are increasing it by 1, your number of nodes get doubled. You increase it further 1, they get further doubled. Right? Almost doubled. 31 का double क्या होता है? 62 62 plus 1 with one constant. 63 का double is 126. 126 से एक ज़्यादा यानी एक constant add हो रहा है. So things are getting doubled. So आपकी capacity to store the data is really speeding up as you slowly increase height of your data structure, height of your data, height of your binary tree, और height of your complete binary tree. So अब आप मैंने इतना सा बड़ा सा ट्री बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि you should be able to understand it visually कि मेरे पास नीचे येलो वाली ना बहुत सारी स्पेसेस क्रिएट पड़ी हैं. इन सबको जब ऐड करूंगा तो हाइट जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ेगी. हाइट एक स्टेप आगे बढ़ेगी और एन डबल हो जाएगा. और इससे फर्दर जाके अगर मैं एक स्टेप नीचे बढ़ाऊं, लेट्स से मैं कोई रेड वाला नीचे लेवल क्रिएट करूं, तो वो फर्दर नोड्स डबल हो जाएंगे. You can give it a try while sitting back at your home. After the session, you can draw the trees of your choice, and you can count n, and then you can count h as well. But the condition is that we are talking about the perfectly complete binary tree. So now, if you really are understanding this whole story, so there is a beautiful relationship between n and h. So height and n are very beautifully linked with each other. And can anybody tell me that what is the relationship? Okay, one relationship is which we have just figured out. 2 raised power h plus 1 minus 1 अगर हम करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो पावर बहुत बड़ी लिखी गई है, तो लेट मी रीराइट इट. ये हमने अभी पिछली वाली स्लाइड पे देखा ना कि 2 raised power h plus 1 minus 1 is equal to n. ठीक है. So what is h then? What is height? In terms, what is h? level, sir. Power. No. Level of the in terms of n, what is h? लॉग में वैल्यू आ जाएगी. कैसे? Can you recall that the tutorial जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, that what is logarithm? What was log? सर लग 2n आएगा अगर लॉग लगाए. ये 2 जो होगा, ये 2 कहाँ जाएगा लॉग में? अगर लॉग ना लगाएं, ओके, ना भी लगाएं, तो the only task is that you need to figure out yourselves. थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा मगजमारी कर लेना कि in terms of, मैं कह रहा हूँ कि this h is function of n, right? So वो function of n exactly क्या होगा which can give me the height of the tree? So n or n, we should be quite clear in our minds that n is number of nodes in my data structure. H is the tree, h is the height of the tree, and then we want to correlate n and h with each other, ना? ठीक है. So थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा सा खुद सोचें, और अगर आपको लग रहा है लॉग है या लॉग नहीं है, जो भी आपका ज़हन कह रहा है, तो उसके ऊपर यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ लिटिल बिट. सो थोड़ा सा इस पे पेपर पे काम कर लें,
or I think we can take a break over here. It's 11:48 on my watch. So probably let's gather up back after 15 minutes. So let's say let's meet back at 12:05. Okay? So this session is here. So 12:05 we will resume from here. Or meanwhile, try to figure out in next couple of minutes कि आपने इसमें कैसे कंप्यूट करना है इसको. All right. So what could you figure out so far? What is the relationship between H and N? See, if you recall that video which I had shared with you probably few lectures back, or I don't remember exactly कब मैंने share की थी. So we उसमें बड़ी खूबसूरत demonstration थी about the kind of growth which is happening over there. So that was that two raised power x 2 की हम क्या power लें such that it turns out to be n. Or let's say if we have something over here, let's say we fill it with 32. So what essentially that means 2 की हम कितनी power लें? So 2 times 2 times 2 कितने लेने थे? 5 लेने थे. 4, 8, 16 and 32. So this turns out to be this one. So it's essentially this means 2 की power आप लें 5, which means x को अगर आप 5 लें, so that gives you 32. So जब आप 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times इस तरह की बात कर रहे हैं, तो what essentially means that you are multiplying with 2 ना. तो इसका अगर हम इसी प्रोसेस को हम अगर रिवर्सली देखें, so that essentially means that 32 को हम हाफ में कट करते हैं तो 16 हो जाता है. 16 को हाफ में कट करते हैं तो 8 हो जाते हैं. 8 को हाफ में कट करते हैं तो 4 हो जाता है. 4 को हाफ में कट करते हैं तो 2 हो जाता है. 2 को हाफ में कट करते हैं तो 1 हो जाता है. ठीक है. सो 1 से पहुंचने से पहले तक मेरे पास जितने नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे टोटल परफॉर्म करने पड़े हैं ना, 1 2 3 4 5. सो कितने स्टेप्स में मैं उसको हाफ पे करके आ रहा हूँ ना, तो दैट व्हाट एसेंशियली मींस लॉग. तो ये जितने पे आप डिवाइड कर रहे हैं दैट बिकम्स योर बेस. जिसकी आप पावर ले रहे हैं दैट बिकम्स योर बेस. सो दैट इज दैट log base 2 of 32 is x, or in our case that is 5. ठीक है. So that was the kind of stuff which we talked about when we were talking when we were revising that basic concept of log. So if in our context, in case of the complete binary tree, so one thing which we could figure out was that 2h plus 1 minus 1 is giving me n. So what should that और प्लस आपके पास कुछ फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी थी कि फॉर एग्जांपल देयर वाज सिचुएशन कि h है और फिर देयर वाज सिचुएशन कि n है. तो वी सेड कि व्हेन n वाज लेट्स से हमने क्या कहा था सबसे बड़ा नंबर 127 प्रोबब्ली वी कंप्यूटेड. वी सेड व्हेन इट्स 127 तो h वाज व्हाट 6. यही था ना. Yes, sir. Yes, sir. When it was Yes, sir. 63 it was 5. When it was 31 it was 4. When it would be 15 it would be 3. When it would be 7 it would be 2. और फिर उससे नीचे क्या था? When it would be 3 it would be 1. And once it would be 1 it would be 0, which essentially means that when there is only one node it's at level 0, so its height is 0. When there are 3 nodes like this, the height is 1. When there are 7 nodes like this, तो height is 2. ये वाली. तो this is how it was growing ना. तो इससे मतलब it's now practically quite easy to figure it out कि exactly जो h है what is that. अच्छा मुझे एक बात बताएं कि what is 2 की power 6?
128. 2 की पावर 6 No, 64. 64. 64 64. That's why हम अपनी जो हम विजुअल डिपिक्शंस कर रहे थे, that's why we added 1 over here ना, क्योंकि वो एक नीचे आ रहा था ना. तो just imagine that if it would have been 128 and if this would have been 64 and this would have been 32 and this would have been 16, तो इसका मतलब क्या है कि तो और this would have been, let's say, 8. So what we are talking about is that we are talking about perfect powers, no? तो 128 गेट करने के लिए मुझे 2 की पावर चाहिए थी 7, which is 6 plus 1 ना, ऐसा ही था. Yes, sir. Yes. And if इस सिर्फ रेड वाले पार्ट को अगर आप देखें तो because this is a perfect power, so if I take log base 2 of 128, that turns out to be 7. ऐसे ही है. बट मेरे Yes, पास sir. जो n वाला कॉलम है, पूरा कॉलम अगर राइट साइड पे जो n वाला अगर आप देखें, उसमें आप ब्लैक वाले जो नंबर्स हैं जिनको हमने क्रॉस किया था, एक्चुअली हम उस चीज में इंटरेस्टेड हैं बिकॉज दोस ब्लैक नंबर्स एक्चुअली डिपिक्ट my number of nodes in the complete binary tree. So if the number of nodes would have been 127, and if you will take the log of this number, so that would be somewhere 6.9 something. अगर आप कैलकुलेटर से कुछ चेक भी कर ले तो वो 6 नहीं होगा ना, तो 6 तो उसने बहुत नीचे आना है ना. 64 का log will be 6 और 63 का log कितना होगा 5.9 something. 32 का log कितना आएगा 5 और 31 का log 4 point something. So what is the kind of relationship which is there in between these black numbers in both of the columns? Nimra? Sir, may I solve this on this whiteboard? Sorry? Sir, मैं ऐसे whiteboard पे solve करूं? करें. Mm, Can you write on this whiteboard जो आपको अभी नजर आ रहा है? Yes, sir, लिख सकती हूँ. सर मैंने इसको इस तरह से किया है कि सर ये अगर जगह कोई खाली हो तो मैं उधर लिख मैं सकूं. आपको साफ नोट दे देता हूँ. सर ये सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशनशिप ये था कि 2 की पावर जब h plus 1 होगी तो वो इक्वल होगा हमारे नहीं सॉरी -1 -1 वो हमारे पास इक्वल होता है n के. तो अब हमने फाइंड करना है कि हमारे पास h की वैल्यू क्या होगी. तो मैंने इसे ऐसे किया कि अगर मैं 2 की पावर h plus 1 ही रखूं और यहाँ पे इस तरह से कर दूं कि n minus 1 कर दूं. n plus 1 करेंगी ना? सॉरी n plus 1 वहाँ पे ये माइनस हो रहा था तो यहाँ के प्लस हो जाएगा. तो अब अगर मैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और मैं इसे लॉग फॉर्म में लेके जाऊंगी ताकि मेरे पास एक पेट आंसर आ जाए h के लिए. तो अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो जैसे अभी आपने बताया कि मैं ऐसे करूंगी कि लॉग और इसकी बेस जो होगी वो मेरे पास 2 होगी और यहाँ पे मेरे पास आएगा n plus 1 और वो इक्वल हो जाएगा h plus 1 के जो पहले 2 की पावर थी. तो अब इसी जो +1 यहाँ पे हो रहा है मैं इसको इधर आके अगर -1 कर दूंगी तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी. ओके, बिल्कुल ठीक. तो सर मैंने इस तरह से h की वैल्यू फाइंड की है. फिर ये सारे जितने भी n नंबर्स अगर हमारे पास हों हम जो भी पुट करें तो h की वैल्यू सही आएगी इससे. बिल्कुल ठीक है, मेक्स लॉट ऑफ सेंस.
anyone else? Anyone interested in commenting on this thing? यस सर, मैंने भी इस तरह सॉल्व किया था सर। ये बिल्कुल ओके, दाऊद ने भी इस तरह किया है, अनस ने भी किया, और बाकी लोग, what are your thoughts? सर मैंने भी इस तरह ही किया। Okay, so can you cross check it quickly कि जो हमारे पास अब टेबल आ रहा है, does that make sense with this? Because if I write this, मैं उस वापस जाके ना उस जो पिछले वाली साइड थी उसके ऊपर ये वाला फंक्शन कहीं लिखने की कोशिश करता हूँ, on some part of it, तो ताकि हम वो numbers के साथ we can correlate. Let me try to write it here. तो h has turned out to be log base 2 of n plus 1 minus 1, इस तरह था कुछ, यही क्या था ना आपने? इसी तरह। यस ठीक सर। है, ठीक है, तो 127 is, अच्छा अब जो ब्लैक में हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, those are actually the वो n है ना, तो n plus 1 जो है रेड में लिखा हुआ हमने ये वाला ना, तो ये रेड वाली सारे नंबर्स हैं, those are n plus 1, उनका log will turn out to be 7 6 4, so your function, this relationship will perfectly work. Very good. ठीक है, अच्छा मेरे पास ना एक so probably we are agreeing all on this, तो मेरे पास दूसरी वाली जो इंडिकेशन जो मैं इस वक्त शुरू कर रहा था, जिसके बाद निम्रा ने कहा था कि वो बताना चाह रही हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इसको यूँ लिखें तो आई थिंक दैट विल आल्सो वर्क, कि आपके पास जो log base of n में जब लेता हूँ ना, तो दैट टर्न्स आउट टू बी h plus 1 ना, सॉरी log base n plus 1 लेता हूँ, तो रेड वाले जो फिगर्स हैं 128 to 64 32 16, बट अगर मैं एक्चुअल n का log लूंगा तो दैट विल बी स्लाइटली लेस देन दैट, और वो स्लाइड फॉर एग्जांपल अगर आप 127 का log लें तो दैट विल टर्न आउट टू बी 6.9 समथिंग, 63 का log लें तो दैट विल बी 5.9 समथिंग, 31 का log लें तो दैट विल बी 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दिस इज log ऑफ n जो एक्चुअल नंबर ऑफ नोड्स हैं, एंड वी जस्ट टेक द फ्लोर फंक्शन ऑफ दैट आंसर, तो वो उसका जो उससे नीचे वाला जो इंटीजर होगा तो विल ड्रॉप टू दैट, एंड दैट विल गिव मी h, so that will also work. Do you agree? कि गड़बड़ होगी है? So 127 का जो एग्जैक्ट लॉग है दैट इज 6.9 समथिंग, तो उसका मैं फ्लोर लूंगा तो दैट विल बी 6, 63 का एग्जैक्ट लॉग इज 5.9 समथिंग, फ्लोर लूंगा तो 5, इसी तरह 4.9 या 4.8 आएगा 31 का, 3.9 समथिंग आएगा 15 का with the base 2. So if we take the floor, आपको फ्लोर का पता है ना सबको? यस तो उसके डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट हम उड़ा देंगे तो उसकी जो रिमेनिंग इंटीजर होगा दैट विल बी इट्स फ्लोर ना, so that will give me h, और बट आपका वाले जो फॉर्मुलेशन थी दैट विल आल्सो वर्क परफेक्टली। ठीक है, अच्छा अब हमें ना इससे एक मजेदार किस्म की चीज़ हमें मेरे ख्याल से समझ आ रही है इसमें से, और वो ये है कि फॉर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री height of the tree is much smaller than n, very small than n. ठीक है, so if we write certain kinds of functions eventually, जो कि प्रॉब्लम अगले हफ्ते लिख रहे होंगे, if we write certain kinds of functions जिनकी big O is around h, so h is a much smaller number than n, और h का जो rate of growth है function का that is much slower than the rate of growth of n itself. So if we have n data items and if we can write certain kinds of operations or functions for that data structure which can finish themselves in big H, then that would be a probably remarkable kind of achievement in terms of complexity, because आप big O n से बहुत नीचे अपनी चीजें कर रहे होंगे, और in our context that H is primarily representing log of n. ठीक है, so वो जो आपने फॉर्मुलेशन मुझे बताई थी where did it go, जो निम्रा ने बताई थी ये वाली ग्रीन वाली, सो अगर आप इसको एच को देखें ना
तो इसको सो इसमें ना कुछ आप बिगो की टर्म्स में जब हम देखते हैं तो -1 कांस्टेंट है, विल स्लैश इट, +1 कांस्टेंट है, विल स्लैश इट. So h is essentially turning out to be big O of log n, right? So it is almost close to log n. So big O की terms में we'll just take it as log of n plus 1 or -1 दोनों constant जो add और subtract हो रहे हैं, तो we'll just trash them while taking the big O. अच्छा, so any questions or comments till this moment before we move to another interesting thing? So just imagine that we have this complete binary tree or a binary tree which we may assume कि complete है, but ज़रूरी नहीं है. इस जो आज हम काम कर रहे हैं इसमें उसकी completeness ज़रूरी नहीं है. So but just for the sake of its beauty we can keep it as, so let's say these are the data items which are filled over there. So this is 50 60. तो मेरे पास कितने डेटा आइटम्स हैं? 6 डेटा आइटम्स हैं. ठीक है, आपने किसी तरीके से हार्ड कोड करके या किसी भी मैकेनिज्म से यूजिंग सम फंक्शन यू हैव इंसर्टेड दीज नोड्स इनटू योर बाइनरी ट्री, and now the task is to display these nodes on your screen, which essentially means that display the data of these nodes on your screen. ठीक है, so तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक तरीका हो सकता है कि मैं कहता हूँ 10 20 50 60 40 30 सारे नोड्स किसी न किसी तरीके से डिस्प्ले हो गए. मैं आपको कहता हूँ यू माइट बी कमिंग अप विद अ डिफरेंट ऑर्डर टू डिस्प्ले दीज नोड्स ऑन द बोर्ड और ऑन द कंसोल ऑफ योर प्रोग्राम. ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने सारे ट्री के नोड्स को डिस्प्ले करना है ऑन योर स्क्रीन, विच एसेंशियली मींस दैट आपने हर नोड तक पहुंचना है, आपने हर नोड को एक्सेस करना है इन योर कोड. when we say कि हमने हर नोड को एक्सेस करना है, तो essentially हम उसको we term it as with a technical term, हम उसको कहते हैं कि we are traversing the tree. So we are doing a traversal of the tree, or traversal essentially means that we are walking over the tree. So और walk का मतलब क्या है? We are going to every node, हम हर नोड को टच कर रहे हैं. अब कहाँ से स्टार्ट होंगे? हम हमेशा हमारे पास जिस चीज़ की एक्सेस है, जिसका हमारे पास एड्रेस है कि ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द रूट नोड, बिकॉज दिस इज द इक्विवेलेंट नोड ऑफ अ हेड नोड या फर्स्ट नोड जो आपने लिंक लिस्ट में बनाया था. सो दिस रूट विल बी एन एट्रीब्यूट ऑफ द ट्री क्लास जो आप बनाएंगे. रूट के थ्रू यू कैन either go to left side or right side. ठीक है, so we want to walk over the tree, इसको हम कहते हैं कि we want to traverse the tree. So in order to traverse the tree, we have some formal techniques. We call them traversal techniques. We call them traversal techniques. So these techniques are used to walk over the tree. These techniques are used to traverse over the tree. These techniques are used to access different nodes of the tree. ठीक है, सो अभी आज वाले कॉन्टेक्स्ट में जो हमने काम देखना है ना, वो सिर्फ हमें ये देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रावर्सल टेक्निक्स आर देयर, और हम जिस टेक्निक को यूज करेंगे तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल व्हिच इट विल बी यूजिंग. So essentially we want to study 3 different traversal techniques, so let's have a look on them one by one.
Okay, I'll come back to this slide after a while. Let me start with even a smaller or simpler example that we have only 3 nodes. Let's say this node contains A, this contains B, this contains C. So here our data is characters. So A is the parent node, B is the left child, C is the right child. So that's it. So this is the smallest kind of, not really smallest, but very small complete binary tree. So the first traversal technique which we want to look at is known as in order traversal. So it means that we start with the parent node, but we don't display it. And we first go to the left child. So on screen, we display the data of the left child. Then we go back to the parent. We display the data of the parent. And then we go to the right child and we display the data of the right child. The alternate mechanism could be, because let me write down all of those 3 techniques ताकि हमें थोड़ा difference फिर हम discussion कर सकते हैं उनके ऊपर. So the next one is known as pre-order traversal. So pre-order says that when you start with the parent, so parent should be displayed first. So then you need to go, so this is number 1, then you need to go to the left child. So you need to display B, and then you need to go to the right child and display C. So the order in which the nodes will be displayed in pre-order will be looking like A, B, C. And if the third one is known as post-order traversal. Post-order says that from the root, go to the left child first. So display B, then go to the right child. So this is 1, go to the right child, this is 2, and at the end, display the parent. So primarily, these 3 techniques, there is something which is common between all of them. And can anybody quickly tell me that what is common between all of them? Hello. यस सर आवाज आपकी आ रही Yes, sir. आ रही है आवाज. Okay, तो आपकी आवाज नहीं आ रही ना, आप बताएं. Okay, Omer is saying we explore all nodes, very good. So this is one thing which is common. Oh, there is another little bit deeper thing which is common as well. What is that? सर पहले हम लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर करते हैं. Very good. और so पहले हमने लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर करना है, फिर हमने राइट साइड को एक्सप्लोर करना है. So in all these 3 traversal techniques, left side is B. So B comes first, C goes after that. B comes first, C goes after that. B comes first, C goes after that. So in all of these 3 traversal techniques, we are starting from the left side. Left वाली side को पहले process कर रहे हैं, and then we'll go to the right side. So what is the point which is making them different? सर सिर्फ इसका रूट नोड वेरी गुड, राइट. जो सो रूट को अगर हम थोड़ा सा जनरल, बिकॉज रूट ट्री में एक होगा ना, और रूट की बजाय हम अगर जनरलाइज कर लें तो इट्स पेरेंट ना. सो बिकॉज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी एनीवेयर इन द ट्री. ठीक है. सो पेरेंट is the critical point which is making difference amongst all these 3 techniques. So in order, parent is coming in between left child and right child. In pre-order, pre means before, A is coming before the left and right children. Post means after. So in the post order, A is coming after both of the children. And within the children, the order is fixed, which is from left to right. Okay.
Okay, sir. So now let's spend a couple of more minutes on understanding this stuff which is there, which you can see right now. Okay, let me quickly repeat it. Common चीजें जो आपने मुझे बताई हैं वो ये हैं कि we'll start so amongst the children left child needs to be processed first, और हमारे पास आज की context में processing का मतलब है display करना. So we'll display the left child first and we'll display the right child after that in all of them. तो B is the left child, C is the right child. So तीनों में जो common चीज है वो ये है कि B पहले आता है, C उसके बाद आता है, B पहले आता है, C उसके बाद, तीनों में ये नजर आ रहा है आपको. So the differentiating point is that the parent node की जो placement है वो कहाँ पे जानी है. So in ordered reversal, parent node will be placed in between both of the children. In the pre-ordered reversal, parent node will be displayed or processed or placed before both of the children. And in the post-ordered reversal, the parent node will be placed after both of the children. Right? So, any questions or comments or confusions till this moment? नो No? सर कोई क्वेश्चन नहीं. Very good. So अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरी बारी है फिर क्वेश्चन करने की. कि we go to the slide which we saw a while ago, that this is a tree, or I'm taking a pause of few minutes but I'm listening to you. आप सब लोगों ने इस ट्री को ड्रॉ करना है on your notebook right now, and then you have to write down the order of these nodes कि प्री ऑर्डर में इसकी तरतीब क्या बनेगी, पोस्ट ऑर्डर में क्या बनेगी, और इन ऑर्डर में क्या बनेगी. So try to write down individually. This is not a quiz, but I really want you कि अगर आपको पिछले वाले वो basic concept समझ आए तो can you extend that concept on a slightly bigger tree. इन ऑर्डर में क्या आएगा, प्री ऑर्डर में क्या आएगा, पोस्ट ऑर्डर में क्या आएगा. ठीक है. So take 5 minutes to write down all these three outputs for this tree which is there on the screen, and then you can get back to me. So I'm just pausing over here, but I'm listening to you. I'm available, right? So please try to do it yourself. Please raise your hands जिन जिन लोगों ने कर लिए हैं तो. सैफुल्ला, दानिश, जमशेद, बिलाल, कैस, सिकंदर, ज़ुहैब, सिद्रा, इनायतुल्ला, उमैर, दाऊद, ज़ुबैर, अली मुर्तज़ा, किरण ज़फ़र, शर्जील, सानिया, जवाद, शहजाद, निदा, मलाइका, हुर्मत, निमरा, अतीका, बख्तुल्ला, सिद्रा, खालिद, सफ़िया, आसिफ, इप्रा. Very good. किरण, तहरीम, खदीजा, हमजा, वज्जी, I hope the rest of the people are also doing right now, right? Fatima. Very good. Okay, so this is brilliant that most of you have attempted it. So what about who will volunteer? Umair has already sent sent the answers to all of the people. Some other people have sent the answers only to me. So one easy way to go along is that I can try to capture the
I don't know whether I'll be able to do it or not, but let me try it. कि मैं ये जो उमैर ने जो डेटा भेजा उसको मैं किसी तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर दूं, so that all of you can see it. Let me try it. मेरा ख्याल ऐसे पेस्ट नहीं होगा. So can all of you have a look on what he sent? या किसी और को somebody else interested in volunteering जिसके solutions हम discuss कर सकें? या बल्कि इस तरह कर लेते हैं. I think चूंकि I'm not able to display it, so what I can do is I can write down the solutions with you. आपके साथ मिलकर डिस्कस कर लेते हैं. उनको मैं इधर स्क्रीन पे लिखता जाता हूँ और you have to verify it with your stuff. Or if you feel difficulty, तो you can just let me know कि it's not working. ना? Why is it so? So let's start with in-order traversal. So in order में हमने क्या कहा था कि left child will be processed first, then it will be the turn of the parent, and then it will be turn of the right child. So we start from 10. So go to the left child. So before we actually process 20, 20 is parent of 30. So 30 gets higher priority than 20. So from 20 we go to 30. So 30 के जो left पे है, 30 can be possibly a parent, but 30 के left side पे is null, उसके right side पे is null. So 30 will be displayed first. Then we'll go to 20. So 20 के चूंकि left child process हो चुका है, अब उसकी अपनी बारी है. We go to the right child of 20, which is 40. 40 का हम लेफ्ट चेक करेंगे, वो खाली है, तो 40 की अपनी बारी आ जाएगी. फिर 40 का राइट चेक करेंगे तो खाली है. सो अब हमने ये वाला जो सब ट्री है, ट्री का जो पार्ट है, ये वाला जो ट्रायंगल में है, वी हैव कंप्लीटली प्रोसेस्ड इट. अब इसकी कंप्लीट प्रोसेस का मतलब है कि 10 का जो लेफ्ट साइड है दैट हैज बीन प्रोसेस्ड. if left side of 10 has been processed, then it's turn of 10. So 10 will be processed then because parent has to go in between left and right branches. So then we'll go to 50, but 50 is parent of 60 and 60 is the left child of 50. So 60 will be processed after this, and then we'll process 50, and then we'll check right side of 50, which is empty. So we don't need to process it further. So our output looks like 30, 20, 40, 10, 60, and 50. Any disagreements with this output or any confusions in this output? No, sir, agree with Umair. Very good. No, So sir. okay, so now what we can do is that we can try another kind of traversal on the same tree. So let's say we start with now pre-order traversal. And in pre-order, parent needs to be processed first. So 10 is the parent, 10 will be processed first. Then it goes to its left child, and left child itself is a parent, so it will be processed first. Then we'll go to its left child, which is 30, or 30 can be parent, और इसका left हम check करेंगे वो खाली है, right check करेंगे वो भी खाली है. We'll go back to 20. 20 का right side is still panning, so we'll process that. तो अब as a result what we have done is that we have processed the entire left side of 10, or 10 itself was processed before anybody else. So we'll go to the right side of 10, which is 50. Left and 50 is the parent, so it will be processed first. Then we'll go to its right side, and that will be go to its left side, which is 60, or its the right side is empty. So essentially the output will be looking like 10, 20, 30, 40, 50, and 60. And this will be our output on the pre-order traversal. Any comments or concerns on pre-order traversal? No, sir. So then let's start with post-order traversal.
So we'll start with post order में क्या था कि left child will be processed first, then the right child will be processed, and the parent will be processed at the end. So we'll start with 10, then we'll go to its left child. Left child itself is a parent, so we'll go to its left child. So 30 के left पे हम check करेंगे, which is empty. फिर इसका हम right child भी check करेंगे, which is also empty. Then 30 के pre-turn आएगी, so we'll process 30. We'll go back to 20, and then we'll go to right of 20. We'll process 40. So जब 30 और 40 दोनों process हो चुके होंगे, which essentially mean that both of the children of 20 have been processed. So now it will be turn of 20, so it will be processed. We'll go back to 10, but 10 is the parent, so it has to be processed at the end. So we'll go to right branch of 10. We'll process 50, and then we'll sorry, we'll not process it, process 50. So हम कहाँ थे 10 से हम right side पे आए. Is 50 is the parent, so parent की children पहले process होंगे because we are into post order. So 60 will be processed first, then we'll check right side of 50, which is empty. So 50 itself will be processed. या 50 process हो चुका है, इसका मतलब 10 के दोनों sides की जो children हैं, those have been processed. Now it's turn of 10, and then 10 will be processed. So our output will be looking like 30, 40, 20, 60, 50, and 10. So this will be our output on post order traversal. Okay, take a minute to absorb the answers, and if you have any confusions or questions or concerns, so please feel free to raise now. No questions? So if there are with respect to screen, we'll go first at right side. What we are doing is that we are defining it, yes, with respect to screen, it's your right side. So that's how we are defining left side. This is left side, and this is the right side. Okay, so in all our discussions on the binary trees, we'll follow this this order, और मेरा ख्याल है सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी ये ऑर्डर फॉलो करती हैं. So in this kind of exercises, आप सबके आंसर्स should be same ना, because the order is fixed, so and data is also fixed कि कौन सा आइटम कहाँ पे पड़ा है. So all of you need to end up into the same answer. So let me draw another tree. Is it a binary tree? Yes, sir. Is it a complete binary tree? No, sir. No, sir. Very good. So hopefully you now understand the difference between the binary tree and a complete binary tree. Before I come back to this tree, one comment which I hope that you would have now been able to understand
कि what about this one? ये जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, is it a binary tree? Is it a binary tree? No. यस नो सर सर Yes, Yes sir. or no? Binary. सर यस सर सर बाइनरी ट्री है ये सर वन एलिमेंट बाइनरी है सर बाइनरी है कंप्लीट बाइनरी नहीं Complete binary tree सर नहीं है. वन Is it a एलिमेंट binary tree? Somebody said no as well. तो no वाले नहीं वापस ये yes पे आ बाइनरी गए. है यस सर आ गया Okay. So because binary tree क्या होता है? जिसमें at most 2 child node हो ना, तो इसमें हर node के अगर एक एक आ रहे हैं, that's fine. ठीक है, तो at most वाली condition violate नहीं होती. So it's a binary tree. So what about this kind of tree? Is it a binary tree? सर ये ऊपर Yes, sir, लिंक है binary. नहीं, ऊपर लिंक नहीं है, रेड वाला रहता है. सर नो फिर यस सर Is it a binary tree? आई थिंक नो सर Why no? सर ये सर राइट से कनेक्टेड है. Daud, why no? सर इसका कनेक्शन राइट ब्रांच का तो उसके साथ तो है ही नहीं किसके साथ? राइट वाले का रूट के साथ इसका रूट ये है जो ना. हमारे पास दिस इज नोड सेपरेट था ट्री ना. तो दो ट्रीज है ना. सर सेपरेट पीछे वाला खत्म हो गया ना. यस Tree है सर, binary सर tree. सर बाइनरी है सर बाइनरी ट्री है सर बाइनरी है बाइनरी ट्री है बाइनरी चीज है दो अलग-अलग बाइनरी एक ट्रीज हैं. ठीक है, और जब बहुत अलग-अलग सारी ट्रीज हो तो क्या चीज बन जाती है? जंगल जंगल, राइट. सो इट्स अ फॉरेस्ट इफ देयर आर मल्टीपल बाइनरी ट्रीज. अच्छा, वैसे फॉरेस्ट साइड पे रख के ओके व्हाट या सो एक पर्पस के लिए हम इस तरह के एग्जांपल्स पे आए थे. सो जो ब्लैक वाला ट्री है, व्हाट इज इट्स हाइट इन टर्म्स ऑफ एन? सर फोर एन फोर In terms of n, what is this height? What is n for black tree? सर एन है सर n कितना है black tree का? 5 5 है Height. सर तो height कितनी है? फोर n minus 1, right? What about red वाला tree? H is 4 सर n minus 1 again. ठीक है. So this is one kind of H जो आ रही है because the trees are not complete. This is an extreme. This is a very high height, very high height ना, कि आप देखें ना कि जो रेड वाला या ब्लैक वाला दोनों में जो कॉमन चीज है, both of them are going very deep. ये बिल्कुल उस तरह का दरख्त है जो सिर्फ एक ही ब्रांच के ऊपर बढ़ता जा रहा है ना. ठीक है. तो अगर ये इस तरह का ऑलमोस्ट लीनियरली बढ़ रहा है तो इस हाइट विल बी वेरी हाई वर्सेस द काइंड ऑफ ट्री जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे कि इफ दिस वुड हैव बीन दिस काइंड ऑफ ट्री, तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हाइट वाज log ऑफ n और बिगो log ऑफ n, है ना. सो फॉर अ बाइनरी ट्री जिसकी शक्ल हमें पहले से नहीं पता होगी, तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ व्हिच वी कैन गेट फॉर अ बाइनरी ट्री. इससे छोटी हाइट नहीं हो सकती फॉर अ बाइनरी ट्री log n से. और दिस इज द अपर लिमिट on the height that if we have not seen the structure of the tree but it is binary and we are not sure how complete it is, so its maximum height can get to big O n and its minimum height will be big O log of n. So this is the lower limit on the height of a binary tree and these two are the upper limits on the height of the tree. Are you getting my point? So agar aapko, if somebody poses a question to you that there is a tree which you could not see sometime, आपने कभी नहीं देखा, तो उसकी हाइट कितनी होगी? उसकी मिनिमम हाइट could be log n, उसकी मैक्सिमम हाइट could be n. ठीक है, it could be somewhere in between ना. ठीक है, but if it's complete, so then we are sure that it is going to be log n. ठीक है, so that is the kind of range, lower limit और upper limit जिनके दरमियान में height of a binary tree can shift.
ठीक है. So small exercise which you need to do preferably now ताकि आपकी practice जरा पक्की हो जाए. और या आप you can take a little break and you can do it afterwards. You have to do in order traversal. You have to do pre-order traversal of this tree. You have to do the post-order traversal of the tree. So this is a kind of ungraded homework. जिसको हम grade नहीं करेंगे, but it's strongly suggested that you practice it so that for a complex tree you can figure out that how pre-order, in-order and post-order are being managed. और इसको करना इसलिए भी ज़रूरी है because your lab will be based on this kind of implementation. So अगर आपको उनकी concepts नहीं समझ आएंगे, then it will become little harder for you to code them. So preferably do it before the lab, or you may start your lab with this exercise अगर आप उससे पहले rest करना चाहते हैं तो. But what I'll do is that probably I or Saqib, one of us, will share solution of this this tree in order, pre-order, post-order with you on the WhatsApp group ताकि आप उसको फिर compare कर सकें आपस में ना. और अगर आपको फिर भी confusions लगती हैं तो please feel free to get back to us. Okay. सर क्वेश्चन रिपीट कर दें सर एक बार. Question is that given this black tree, this is a binary tree, so find out its in order traversal की output, pre-order की और post-order की. So for all of the traversals, walk over the tree and find out कि किस किस order में ये nodes display हो रहे होंगे. ठीक है. Once you are done, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट से द ओनली पर्पस इज मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं बिकॉज जो मैंने अपनी छोटे वाले ट्रिप एक्सरसाइज की थी तो ऑल ऑफ यू आर लुकिंग क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट ना. तो होपफुली यू विल बी कंफर्टेबल अभी भी. तो सिर्फ आपने पेपर पे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर करना है इसका और अनग्रेडेड है. ठीक है. ग्रुप में बैठ के करना चाहते हैं ग्रुप में कर लें जैसे आपको कन्वीनियंट है. बट वी विल शेयर द सॉल्यूशन विद यू. फिर आप अपने सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर लीजिएगा. अगर मैच कर गए तो हैप्पी, ना मैच किए तो ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट वेंट रॉन्ग. ठीक है. हो सकता है हम गलत सॉल्यूशन भेज दें तो फिर देन यू हैव टू एनालाइज इट कि अच्छा आप इसको कैसे उस ट्रैक पे लाना है ताकि आपकी आउटपुट्स एग्जैक्टली वो हो जाए जो होनी चाहिए. ओके. यस Yes, ओके sir. सर. Any other comment, question till this moment? सर Yes. क्या हम इसको एरे में कर सकते हैं? हाँ नहीं, इसको तो हम आप एरे में नहीं करेंगे ना. इसको नहीं सर, मतलब ऐसी क्वेश्चन है कि क्या हम कर सकते हैं एरे में? हम ना ट्रीज को कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शंस ना. लेकिन जिस तरह का ये ट्री नजर आ रहा है ना नीचे आपको, जिस तरह मैंने अभी बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर करें, इसके लिए आप नहीं कर सकेंगे. इसके लिए इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द एरे बिकॉज अब 9 को नहीं पता कि मेरे लेफ्ट पे कौन है. राइट का पता होगा, फिर 3 के आगे 2 आ रहे हैं तो कभी 2 चिल्ड्रन आएंगे, कभी एक भी नहीं आएगा, कभी एक आएगा, कभी लेफ्ट पे आएगा, कभी राइट पे आएगा. सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दीज थिंग्स इन द एरे. आप एक नोड क्लास बनाएंगे, उसमें 3 चीजें होंगी कि उसका डेटा वाला पार्ट, एक उसका लेफ्ट वाला पॉइंटर, एक राइट वाला पॉइंटर. Then it will become more easy to manage for you. But probably after 2 to 3 weeks we'll do this kind of exercise, not exactly same, but tree को हम किसी बिल्कुल different context में use कर रहे होंगे and over there we'll discuss कि हम array अब हमें कैसे help कर सकता है ना. ठीक है. तो उसमें कुछ additional properties आ जाएंगी इस tree में. So then we'll be able to go for array, but not right now. So it's not suggested to even think of arrays on this implementation. Try to implement it on the similar lines as you did it for the linked list. Okay. Understood, sir. Yes, sir. Any other comment? So thank you very much. That's it from my side. Stay safe. See you next week. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.